Jai Jagannath, hello friends, this is Basudev Panda, welcome to Marks of English. Play class number 3, English, compulsory. या पूर्व आम इकोनॉमिक्स देखिले इकोनॉमिक्स पढ़िले तापर एमआईएल ओडिया पढ़िले एबे जीवा आमे कंपलसरी इंग्लिश आर्ट साइंस कॉमर्स पिलांगर ये होची कोन टेलीविजन रो दुईटा सिलेक्शन पेज किछि 10 टी सिलेक्शन प्रश्न माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आलोचना करिवा आउ मेन होची ए क्लास गुडी को करिवार अर्थ होची जे आमे ए क्लास रे बुझिबा आमे केमते लेखु जे जानिबा आउ पैसेज भितरु केमते उठेबा सेटा होची इंपोर्टेंट हाउ टू गेट द आंसर फ्रॉम द पैसेज नहीं सेटा होची इंपोर्टेंट कल्याणी यस 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 तो पिले टेलीविजन टेलीविजन गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर ए वर्ष पिला मानन को पई so the most important thing we have learned so far as children are concerned is never let them near your television set जो chapter रहला it start हेगी a dozen eyeballs on the floor पर्यंत जाईची तो जो माने जॉइन करछे फटाफट शेयर कर दवा जाफल रे फ्रेंड्स माने भी जॉइन करबे तो प्रथम प्रश्न होची व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट पोएट सर्व्स हियर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 होची व्हाई इज टेलीविजन कॉल्ड एन इडियोटिक थिंग क्वेश्चन नंबर सी व्हाट कैन वी फाइंड इन एवरी हाउस ऑफ क्वेश्चन नंबर डी हाउ लॉन्ग डू चिल्ड्रन वॉच टीवी क्वेश्चन नंबर ई हला व्हाट डिड द पोएट सी इन सोमन्स प्लेस लास्ट वीक ए होची पांचटा प्रश्न बुझेला पिले कौन थिला प्रश्न गुड़िक समस्त को भगवान आशीर्वाद करंतु भगवान जगन्नाथ आशीर्वाद करंतु माँ मंगला आशीर्वाद करंतु समस्त को यहाँ ही कामना पिले जो माने भी माने मते कन्वे करूछ समस्त को तो पर्टिकुलर ना नहीं कि मु कहू नाही कारण वीडियोटा आहुरी लंबा हबो ओके आ समस्त रिजल्ट बोलो इंपोर्टेंट होची मु मोर माने मेन कथा होची पिले समस्त रिजल्ट बोलो ओके आ रिजल्ट बाहरला परे पिला ओके तो प्रथम प्रश्न कौन थिला व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट द पोएट सर्व्स हियर कौन पिले तो याको केमती लिखिया पिले केमती हाउ टू राइट दिस आंसर द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देन द आंसर दिस इज द टेक्निक दैट वी आर टू यूज एंड वी आर टू अवॉइड ग्रामेटिकल एरर कि ओटे खाली मते पचारुतला जे सर एक्चुअली माने इंग्लिश रे किस टेक्निक देयर इज नो टेक्निक गाइस कुछ टेक्निक है ही नहीं इंग्लिश है ही नहीं ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कोई टेक्निक लगा हो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है बस कुछ ही चीजों का ध्यान रखना है सो द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग द पोएट वांट्स टू सर्व टू द पेरेंट्स हला एटा कोठु नेली मो प्रश्न भितर नेली ओके पेरेंट्स इज दैट दे शुड नेवर इंस्टॉल अ टेलीविजन सेट एट देयर हाउसेस getting me so should never install a television set in their houses this is the part this is the answer that much you have to write and you will be awarded 2 marks remember getting me next question number b why is television called an idiotic things television taku idiotic things boli kai ko jaichi why it is called an idiotic things bujela 10 to 15 minutes class tapar IT class start kariya bole so मु कौन कहली पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हबा सो टेलीविजन इज कॉल्ड एन इडियोटिक थिंग्स बिकॉज एतिकी लेखिले गॉड ब्लेस यू बेटा प्रोलेक्टर एतिकी लेखिले एग्जामिनर जानिबो कि तमे मनरु लेखिछो जानि थाओ तो यू आर टू अरे कल्याणी तोर होनी रिपोर्ट राइटिंग अच्छा काली क्लास करबा रिपोर्ट राइटिंग दिन बेला क्लास करबा ठीक अछि दिन बेला गो टाइम कहबो 2टा रु 2 हां 2टा रु 5टा भितरे 2टा रु 5टा भितरे काली 3टा क्लास हबो बिले कारण काली संध्या बेले मोर एक्चुअली मु अलगा काम रे बिजी रहिबी 8:30 पर्यंत तो तमर जो 6:30 रु 8:30 लाइव करथली से 6:30 रु 8:30 टिके रहिबो नाही काली दिन बेला सेटा 3टा 2 रु 5 3टा क्लास रहिबो तो प्रश्नटी थिला व्हाई इज टेलीविजन कॉल्ड एन इडियोटिक थिंग्स व्हाई इज टेलीविजन कॉल्ड एन इडियोटिक थिंग्स okay so television is called an idiotic things because it solves all sort of useless things keyword hochi useless it solves useless things and to the young mass kaha ku diye to the young mass they forget study and waste time in cheap tv programs रे से माने समय नष्ट करंती आउ पाठ पढ़िबा भूली शांति जोथि पई टेलीविजन टाको गोटे इडियोटिक थिंग्स बोली की कहा जाय छै ओके परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न होची
what can we find in every house? प्रत्येक घरे what can we find in every house? प्रत्येक घरे हमको कौन देखिबा को मिले? Because it is very useless and they'll all before TV set for hours. Yes beta, yes. Answer can be written in different types beta. Pralipta, yes beta. So next question thila कौन पिले? What can we find in every house? प्रत्येक घरे आमे कौन देखिबा पई पाउचे? Sutinanda, television set, Pralipta television set, official Harishchandra. Okay, television set. So in every house we can find children watching television. हमको कौन लिखा रही? In every house we can find watching, children watching television sets and gaping at the screen attentively. नहीं, gaping at the screen attentively. सतर नहीं. टेलीविजन सेट तो मिलुची आ सहित से माने पिला माने कोन करछथि दे आर वाचिंग द टेलीविजन constantly without the inkling of the eyes. Next question hochi question, how long do children watch TV? How long do children watch TV? बहुत सहज प्रश्न. How long do children watch TV? बहुत सहज शॉर्टकट रे लिखबा मु केबे माने try to avoid long answer. What is in English? This is the key. Try to avoid long answer. Okay. Why? Because if you write long answer, then there are chances that grammatical error can be occurred. So that's why you have to avoid long answer until their eyes become tired. Sutinanda, Pralipta, for hours. Okay, good. So the right answer will be children watch TV until their eyes pop out. Boirumu utheli uttarata. So children watch TV until their eyes pop out, until they feel tired. जो पर्यंत से माने क्लांत हेई न थांते से पर्यंत से माने टीवी देखते. Until their eyes pop out, जो पर आखि जो लाल लाल है कि फुली न जीव आखि माने स्टिक है न जो से पर्यंत से माने देखते. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. सस्मिता, गॉड ब्लेस यू. शेष प्रश्न ए सेशन ए सॉरी ए माने पैसेज रो शेष प्रश्न कोन? What did the poet see in someone's place last week? What did the poet see in someone's place last week? शेष माने गत सप्ताह रे कोन देखिथिले? What did the poet see in someone's place last week? कोन देखिथिले पिने? Last week in someone's place the poet saw a dozen eyeballs on the floor. बोइरे अछि सीधा. So last week in someone's place the poet saw a dozen eyeballs on the floor. Many eyeballs in the ground. Yes. English can be written differently as I have told you. पिले परवर्ती सेशन को जिवा, परवर्ती पैसेज ऊपर को जिवा. परवर्ती पैसेज रो प्रश्न उडी कहउची ऑप्शन ए. How long do children sit in front of television? पिला माने टेलीविजन सामना रे केते समय पर्यंत बसंती? 1 2. What is sucking ghastly junk here? Sucking ghastly junk बोली के टिका आगु कोआ जाय छी. क्वेश्चन नंबर 3. Why do parents allow children to watch TV? पिला मान को कहीं की टीवी अरे इंग्लिश रे कोनो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रे बाबू बिरंची. देयर इज नो लॉन्ग क्वेश्चन. को कॉलेज रे पढतु रे बापा? इंग्लिश रे लॉन्ग क्वेश्चन अछि रे बापा? सो what is sucking ghastly junk here? Sucking ghastly junk बोले काहू को जाय छी. नेक्स्ट रहला, why do parents allow children to watch TV? Why do parents allow children to watch TV? काहे की टीवी काहे की वॉच करंती? एप्लीकेशन भी इंग्लिश रे नाही रे बाबा. तापरे रहला, what harm does TV do to the children? पिला मानकर कोन क्षति करे टीवी? पिला मानकु कोन क्षति करे? पिला मानकर कोन क्षति करे? और लास्ट क्वेश्चन ता होजी, what would children do without TV? पिला मानकर जदी टीवी दिया जीव नाही ताल से मान कोन करिवे? So these are the questions that we discussed in this class. प्रथम प्रश्न थिला. प्रथम प्रश्न कोन? How long do children sit in front of television? केते समय पर्यंत पिला माने टीवी सामना रे बसंती? How long do children sit in front of television? ये होसी प्रथम प्रश्न. कोन हो उत्तर? प्रलिप्ता. Until their eyes pop out of their sockets. Good. Sutinanda. Until their eyes are popped out. Good, very good. Okay, let's see some other answer. How the students are answering. So children sit and stare in front of TV until they are hypnotized by it.
passage change passage कहली नहीं, that was my mistake. They sit and stare and stare and sit until they are hypnotized by it, until they are absolutely drunk with all that sucking ghastly song. Oh yes, we know it keeps them still. They don't climb out the window sill. They never fight or kick or punch, and worse, they they don't climb out the windowsill. They never fight or kick or punch and wash the dishes in the sink. But did you ever stop to think, to wonder just exactly what this does to your beloved thought? It rots the sense in the head. It kills imagination. It is the passage. Bujela. It is the passage. Pila. They are mesmerized. Very good, Araf. Yes. So, how long do children sit in front of television? Children sit and stare in front of TV until they are hypnotized by it, until they are absolutely wrong with all that ghastly song. Siddha passage ru utaichi mo pile. Paravarta prashna ara varshar pattern. Paravarti prashna hochi B. What is sucking ghastly junk here? It is sucking ghastly junk boli kagu koha jaichi. So, sucking ghastly junk here refers to rubbish things that television serves to the viewers. Rubbish things that television serves to the viewers. टेलीविजन जो पिला मान को जो खराब जिनस सब प्रोड्यूस देखौची ताकू एठी घास्टली जंक बोली की कह दैछि. ना देयर इज नो एमसीक्यू इन इंग्लिश दिस ईयर. Okay, there is no English in no MCQ in this year in English, especially those students who are extracurricular. They will have MCQ. Okay, and this is the last year. The extracurricular students will also be provided MCQ. From the next year, there will be no MCQ at all. Remember this. So next question, Vile. Why do parents allow children to watch TV? Why do parents allow children to watch TV? बापा माँ कहीं की पिला को allow करमती TV देखिवा पाए. ये होची परवर्ती प्रश्न. Devastating impact on children. Okay, Arav. So the parents allow children to watch TV so that, or because you can write, they will remain absorbed and they will be free to do their homework. The student will remain absorbed in television, watching television, and parents can do their household work. That's why they allowed their children to watch television. Due to gain some information, Shakti. Suthinanda, because it led them to do their work. Correct? Exactly. Okay. Paravarti prashna dekhiba. Question number D. What harm does TV do to the children? Corwin selection. So, what harm does TV do to the children? Pila manankara kono kyati karita hai. Acha pralipta kala they cook and wash dishes. Very good. Yes. Education class habo. Ya pare IT habo, tapare education habo. एबे नेक्स्ट क्लास होची आईटी तापरे एजुकेशन तापरे लास्ट क्लास आ गोटे देखिबा कोन करबा. ओके कोन करबा ऑप्शनल ओडिया करबा. ऑप्शनल ओडिया करबा. प्रलिप्ता कहला इट लैक्स देयर एबिलिटी टू थिंक. ओके सो व्हाट हार्म डज टीवी डू टू चिल्ड्रन? एठी कोन हबो टेलीविजन रॉट द सेंस इन द हेड. बहिरु उठेबा जदी प्रश्न उत्तर टेलीविजन रॉट द सेंस इन द हेड एंड किल्स इमेजिनेशन डेड. दुईटा जिंस हम उठेई परिबा बेले कोन गोटे होची एक्चुअली रॉट द सेंस इन द हेड and kills imagination dead. Rhyming होची ए दुईटा जिंस भी हमें उठेई परिबा जदी पैसेज भितरु लेखुचे. द वेड इफेक्ट्स ऑफ टीवी एंड चिल्ड्रन. आरव कुमार मंडल प्रजिता. एजुकेशन रो टाइम टिके एजुकेशन रो बेटा 8:45 8टा ए क्लास हबो 8:35 रे. नेक्स्ट 8:35 हेले 8:35 रु 8:50 से 9:05 पाखा पाखी हबो. 9:05 9:10 भितर हबो. ठीक अछि एजुकेशन टा. तो परवर्ती क्वेश्चन कोन पिले? परवर्ती प्रश्न होची लास्ट क्वेश्चन आज रो ये सेशन रो लास्ट क्वेश्चन होची व्हाट वुड चिल्ड्रन डू विदाउट टीवी? व्हाट वुड चिल्ड्रन डू विदाउट टीवी? पिला माने बिना टीवी रे कोन करंती? व्हाट वुड चिल्ड्रन डू विदाउट टीवी? सो विदाउट टीवी चिल्ड्रन विल फाइट विथ ईच अदर. फर्स्ट जिंसो दे विल फाइट विथ ईच अदर. किक एंड पंच मरामरी भी हेबे. दुई जन छुआ अछंती माने चुट्टी टणा टणी तो हबो. दे किक एंड पंच प्रलेप्ता. यस एंड पंच. दे विल क्लाइम आउट द विंडो सिल एंड क्रिएट मिस्chief according to the books रे जा लिखाइछि. दे विल क्लाइम आउट द विंडो सिल एंड क्रिएट मिस्chief. So these are the things they will do if they will not be allowed to watch television. Exactly. Yes or no? They will kick, punch and climb at the window sills. प्रलेप्ता. हां बेटा. Dismita. Fight with each other. Good. Yes, we can write. Fight with. They will fight with each other. तो पहले ये थिला इंग्लिश. परवर्ती क्लास 8:27 चला.
से 8:35-36 भितर स्टार्ट होबा नेक्स्ट 10 मिनिट भितर सो गेट रेडी परवर्ती क्लास होची कोन आईटी साइंस बिलांगर आईटी इंफॉर्मेशन साइंस आर्ट्स कॉमर्स बिलांगर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी abbreviation and MCQ. Next class is your IT information technology.